Good evening, ma'am. This is how we say hi. Yes. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, all of you. Hello. Yes. Hello. Hello. Good evening, Binyamin. Okay. How are you all? How are you all? कैसे हैं सारे बच्चे? I'm fine. Fine. Okay. Feeling great. Feeling good. Yes. Okay. Yes. Excited for today? Are you all excited for today? Yes. Okay. Great. So सबसे पहली चीज तो ये है, first and the most important thing is that today you will first just look at the screen. Okay? आज आप सारे बच्चे सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ध्यान दोगे. You don't have to open any application. You don't have to open Word, PowerPoint, Excel, anything. You will just look at the screen. I will be sharing my screen with you all. आप सिर्फ स्क्रीन की तरफ आज देखने वाले हो, and after that we are going to play 2 games. Okay, so I will just, I think ma'am, should we wait another 1 minute for their friends to join in so that we can start. So आज का जो topic है that is very interesting. Okay, so today we are going to learn about the keyboard. Yes, you are using laptops, you are using computers, so उसके ऊपर keyboard है ना, जिसपे सारे alphabets है. But other than alphabets also there are so many keys there. कितनी अलग अलग चीजें हैं उस keyboard पे. So today I am going to teach you what this keyboard is all about. ये सारे keyboard के जो keys है वो किस उनके reasons क्या है, how they are useful to us, and then we are going to play game on increasing your typing speed and understanding the keys around. All right, so give me a quick thumbs up if you have understood what we are going to do. Great. All right, very nice. So just give me a second so that I can share my screen with you all, and we are ready to go. Okay, great. So yes, now here I have used PowerPoint. Okay, so we have learned PowerPoint. So मैं यहाँ पे अभी आज PowerPoint use करने वाली हूँ. So the title of today's session is typing. Today we are going to see how to type fast and how to type correctly. But before we go ahead, I'm going to teach you about a keyboard. So this is our keyboard. And ये आप देखो, look at your own laptops, look at your own computer. Is this keyboard same? आप सबके keyboards ऐसे ही है ना? Yes, everyone's keyboard is like this. You can show me a thumbs up if your keyboards are the same. Yes, great. Okay, so quickly I am now going to show you different keys. Okay, so all right. Okay, so this is known as a caps lock. Can you see this? I have highlighted it with red. This is known as a caps lock. Now ये caps lock क्या होता है? It is when you have to type anything in capital. अगर आप कुछ capital में type करना चाहते हो, then you can type it with the help of this caps lock. आप जैसे ही caps lock को press करोगे, just press and see. जैसे आप press करते हो, वहाँ पे एक light लगता है, छोटू सा एक light लगता है. That means your caps lock is on. अब ये on हो गया है, जैसे हमारा light on होता है ना, light on off. The same way, now your cap lock is on. So जैसे अगर आप कुछ भी टाइप करने अगर जाते हो, so everything will start getting typed in capitals. I will just show it to you how it will happen. Okay. All right. So this is a caps lock. Now second part which comes is, यहाँ पे आप देखोगे तो
there is a sign of like a sun. Okay, छोटू सा ऐसे sun जैसे sign लगता है. Now this sign is for the brightness of the screen. जैसे हमारे फोन की स्क्रीन पे भी brightness होता है, the same way our laptop and our computer has also got a brightness screen. So अगर ये आता है तो इसका मतलब है that your screen brightness, you can reduce your screen brightness. अगर आप उसके ऊपर टाइप करो, अगर आप उसको प्रेस करोगे बार बार, तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्क्रीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर स्क्रीन पूरी तरह से डार्क हो गई है. और उसके ही जो साइड में ये वाला बटन है F2, अगर आप उस स्क्रीन पे प्रेस करते हो तो आपके स्क्रीन का ब्राइटनेस एकदम से बढ़ जाता है. ओके, आपका स्क्रीन का ब्राइटनेस एकदम से ज्यादा हो जाएगा, स्क्रीन बहुत ब्राइट ब्राइट आपको दिखेगी. ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग, यू कैन सी वन बिग रेक्टेंगुलर की हियर. दिस की, आप ये की को देख सकते हो, अ बिग रेक्टेंगुलर की. ओके, यस, this one. Now this big rectangular key is known as space bar. Okay, space, S-P-A-C-E, space bar. Now इसका क्या काम है? जब आपको दो वर्ड्स लिखने हैं, फॉर एग्जाम्पल I am, okay? So now I am, ये दो अलग अलग वर्ड्स है, तो इसमें तो हमें स्पेस छोड़नी पड़ेगी, हम ज्वाइन करके तो नहीं लिख सकते. जब आप नोटबुक में लिखते हो तो आप ऑटोमेटिकली आपकी पेंसिल या पेन उठाते हो और फिर उससे थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखते हो. बट जब आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो या लैपटॉप पे टाइप कर रहे हो, ड्यूरिंग दैट टाइम इफ यू पुट दिस स्पेस बार, अगर आप इस स्पेस बार पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली स्पेस क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिकली धीरे से उसमें स्पेस आ जाती है. एंड देन यू कैन राइट द नेक्स्ट वर्ड, देन यू कैन राइट द नेक्स्ट वर्ड, द अनदर वर्ड. सो दिस इज अ वर्क ऑफ अ स्पेस बार. नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल मुझसे गलती हो गई है, ओके, आई हैव बाय मिस्टेक आई हैव रिटन समथिंग और बाय मिस्टेक आई हैव टाइप्ड समथिंग एंड आई डोंट वांट दैट, ओके, तो मैं क्या करूंगी, आई कैन प्रेस अ डिलीट और देयर इज एन ऑप्शन ऑफ बैक स्पेस. आप बैक स्पेस भी अगर प्रेस करते हो या आप डिलीट भी अगर प्रेस करते हो, देन ऑल्सो you can clear whatever that has been written. कभी कभी गलती हो जाती है ना, हम जल्दी जल्दी में टाइप करते हैं तो गलती हो सकती है, तो in that case you can press that button. Next comes the enter. Okay, so this is an enter key. So enter का क्या काम है? When you press enter button, the moment you will press enter button, जो कुछ आपने लिखा है, okay, so the written part will उसके नीचे shift हो जाता है. So now once you have written a line and then it comes to the second line, that is a work of an enter, or whatever that you have written, it's now final, then you can come down to the second line. This is the work. Okay, उसके अलावा there are so many signs. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे there is 1 2 3 4 everything is written, but यहाँ पे 1 2 3 4 के अलावा यहाँ पे ऊपर भी signs है. Now here you can see there are so many signs here. अब ये साइन को कैसे यूज करना है? अगर मुझे ये साइन यूज करनी है, the one which I'm doing it with blue, okay, if I have to use this sign, what do I have to do? If I have to use this sign, I am going to press shift. मैं shift press करूंगी and then I will press that particular button. Okay, so this is how that needs to be done. Okay, one second. All right, just give me a second. What I'm going to do now here is, okay, now I want everyone to just look at my screen and just pay attention to what I am doing. Okay, so now I have typed a caps lock button. मैंने caps lock button type किया है, click किया है उसके ऊपर, so it is now all highlighted and I am going to type something here. So now it is all coming in capital.
ओके, सो मैंने कैप्स लॉक बटन यहाँ पे टाइप किया और मैंने स्पेस बार, सो व्हेन आई वाज राइटिंग इट आई यूज अ स्पेस बार, सो इसीलिए माय थिंग्स आर हैविंग स्पेस, ये दो वर्ड्स के बीच में इतनी स्पेस क्रिएट हो गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई वांट टू यूज दैट की। अब मुझे क्या यूज करना है, मुझे ये जो 4 के ऊपर जो साइन है या 3 के ऊपर जो साइन है, आई वांट टू यूज दैट की। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्रेस शिफ्ट एंड आई एम गोइंग टू प्रेस द बटन 4। सी नाउ द साइंस आर कमिंग। अब मैं जो साइन चाहूं वो मैं प्रेस कर सकती हूँ। कैन यू सी, all of you, can you see this? Okay, so you have to press 2 buttons at a time. One is the shift button and another one is that particular key जिसका sign आपको use करना है. So you have to use 2 fingers at a time. Okay? अब ये जो कुछ मैंने लिखा है, I don't want that. मैं नहीं चाहती हूँ ये सारी चीजें. So what I am pressing? I am pressing backspace or I am going to press delete button. I am pressing a backspace or I am going to press delete button. So जो कुछ है वो चीजें अब फिर से delete हो गई है. All right. Now again I am writing something. अब मुझे caps का बटन नहीं चाहिए. I don't want everything to be in capital. So मैं caps बटन बंद कर रही हूँ. So see, now it's coming in small letters. Hello friends. How are you all? Okay, now I have typed this. अब मुझे next line पे आना है. I don't want to write continuously. उसके सामने मुझे नहीं लिखना है, मुझे next line पे आना है. So when I want to come on the next line, I am going to press enter. See, automatically I have come down to the next line. I am doing great. अभी मुझे फिर से next line पे आना है. Again I will put enter. So again I am on next line. I hope you are feeling good. So इस तरीके से हम ये कीबोर्ड के ऊपर सारी चीजें यूज करते हैं, सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं. I am again going to share. Okay, my screen is again already in process. All right. So now I have taught you what all things to use. We have learned what is the work of a caps lock, what is the work of a shift, ये buttons को किस तरीके से use करना है, okay? Then how to use a space bar, how to use enter button, shift button, how to use a delete हम कब use करते हैं. अब इसी के साथ साथ if you want to use, अगर आपने जो कुछ किया है उसको अगर आपने सेव करना है, ओके? सो मैंने सेव करने के लिए आपको कैसे सिखाया था, how do we have to save it, कैसे करते हैं हम सेव? Can anyone tell me what do we have to do to save it? What do we have to do to save a file, word file, और हमने PowerPoint फाइल कैसे सेव की थी? What did we do? What did we do? बताओ बताओ, क्या कर रहे थे हम सेव करने के लिए? You can unmute and answer. Yes, we were going. हम क्या कर रहे थे पहले? Yes, Anmol has said it. What we used to do? What we used to do here is you used to go on. आप किस पे जाते थे? आप फाइल पे जाते थे. You used to go on file, then you used to go on save as, और वैसे करके आप सेव करते थे, right? I will show how we used to save. हम क्या करते थे? हम यहाँ पे जाते थे फाइल में और हम फिर सेव एज पे जाके उसको सेव करते थे. बट अब जब हमारे पास कीबोर्ड है, सो देयर इज अ वेरी इजी मेथड टू सेव. ओके, बहुत एक इजी मेथड है
टू सेव अ फाइल. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको फाइल पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सेव एज बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है. You don't have to do anything. All you have to do is you just have to press control button and S. Control and S together. S is for save. Okay? So S का मतलब है save. So S और control button जब आप एक साथ प्रेस करते हो, with the help of these two fingers, when you press control and S together, your file gets saved. आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. And when you have to use these signs, the signs above, that time you have to use shift and the particular key. आप जैसे ही शिफ्ट और वो पर्टिकुलर की प्रेस करते हो, ऑटोमेटिकली आपका ये जो है, जो कुछ आप चाहते हो वो स्क्रीन पे आ जाता है. जैसे यहाँ पे भी मैंने दिखाया, इफ यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क, देन फॉर क्वेश्चन मार्क ऑल्सो यू कैन प्रेस शिफ्ट एंड द बटन टुगेदर. Okay, all of you? Yes, give me a thumbs up if you have understood. All right. Now I am going to give you an instructions and you have to follow it. First of all, open your Word file. Open your Word file. I am not going to teach you how to open a Word file. So open a new Word file. Okay. Open a new Word file. Great. Has everyone opened it? Yes. Now I want you all to use all the keys that I have taught, and you can type whatever you wish to type. In the meantime, I want the parents, please let me know in the chat box whether the kids are using both their hands or they're using their single hand. I mean, are they typing like this or are they typing like this? So just let me know in the chat box how the kids are doing it. Yes, open a Word file. Type something with your caps lock on. Type something with the help of the shift button and the signs. Okay, single hand, both hand, maximum left. Okay, right hand. Okay. Yes. You need to use all the keys. सब keys use करके देखिए क्या क्या हो रहा है. Okay. Press the brightness key. I can see Aditya, your laptop's brightness is too much. So how will you reduce the brightness of the screen? Show me how to reduce the brightness of the screen. Aditya Punekar. Yes, Ananya, even your brightness screen is too much. Show me how you can reduce the brightness of the screen. What button are you going to press for the brightness? Yes, Binyamin. Binyamin, first you need to cancel that. आपके इस पे आ गया है ना, सेव एज का ऑप्शन आया है. So just cancel that. Yeah, you need to press on the cancel button. Yes. Ma'am, she is doing single hand, that right hand. Okay, ma'am. Okay. Yes, Pranav, I can see myself in the screen. Okay, you need to open Word file first. Everyone is going to open Word file. You all know how to open the Word file. Open a Word file and type something with the caps lock on. Done, Aishwarya, great.
Type something with caps lock on. Then type something using both the keys together at the same time, like the shift and the key. Yes, good Pranav. एक साथ यूज करना है. Okay, Word file. you're done. Fine. No मैम, नया नहीं हुआ. Word file खोजे. Word file. वर्ड फाइल ओपन किया है ईशान. ओके, वर्ड फाइल ओपन करने के बाद खोला नहीं मैंने. तो खोलो. वर्ड फाइल ओपन करो. ओपन किए. हाँ. Word file. Yes, वर्ड फाइल ओपन करो. Okay, Kalyan, your laptop brightness is too much. Show me how to reduce that. How to reduce, Kalyan, the screen's brightness. Reduce screen's brightness. कौन सा की हम यूज करेंगे ब्राइटनेस कम करने के लिए? अरे खोल दे. मैम ब्राइटनेस Yes. एक्सक्यूज मैम ऑनी का देखिएगा. like this. Good, I can see the kids doing it. Yes, Binyamin, that's the right key. You press in the smaller circle, yes. The second or the third key in the start of the keyboard is to reduce the brightness. The third key, I guess, yeah, the third key. So if you press the third key, your screen's brightness will get reduced. If you press the fourth key, your screen brightness will increase. Screen बहुत bright दिखेगी. All right. Okay. Ma'am, how do we do it in this laptop? Shift F7, is it? It's above F7. The brightness key is above F7. No, ma'am. So in that case, you just have to press the F7. Just press F7, is it? Yeah. Yeah. Okay, great. I can see so many screens there. Manas is typing something. Anmol is also doing it. Ananya, Soumitra, Arya, Manish, Arjun. Okay. Sir. Great. Great. That's nice. Okay. Omkar is also typing something. Pranav, Anmol, Arjun Mishra. Okay, you can quickly show me a thumbs up when you're done, okay? Excuse me, ma'am. Yes? मैंने अरमान को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्लिक करें. सर क्या क्लिक करने के लिए सर? किसके लिए बेटा बताओ मैडम को. मैं आप जैसे मुझे समझ नहीं आया क्या दबाऊं इसका. क्या दबाऊं? मैं दबाऊं. ओके, आपको वर्ड फाइल ओपन करनी है. हम वर्ड फाइल कैसे ओपन करते हैं? हम लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं, फिर आपको एक ऑप्शन आता है न्यू. सो जब आप न्यू पे क्लिक करते हो, देन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ वर्ड फाइल. यू वर देयर फॉर द प्रीवियस सेशंस बेबी? यू वर देयर? मैं वो तो है नहीं. Actually, my laptop was hanged. My laptop was hanged. मैडम अरमान का दिस इज फर्स्ट सेशन. Okay, sir. We need to open the Word file. Okay, I will quickly show how to open a Word file. My laptop was hanged, so I log in again.
Okay, your laptop got hanged, Pranav. You logged in again. No worries. Okay. Even I feel my laptop is getting hanged. Okay, all right. Excuse me, ma'am. Yes. वर्ड फाइल इसमें है नहीं. बच्चा वर्ड फाइल ऑटोमेटिकली लैपटॉप्स में होता है. I will just show it to you how to open it. Okay. So you press this left side button. Once you press a left side button, you will get an option of new. And when you click on this new, you will get this option of Microsoft Word document. Okay. मैडम एक्सक्यूज मी. Yes, sir. मैडम ये बच्चा एक नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं पढ़ता, ये एक रिसोर्स रूम में पढ़ता है शैमरॉक स्कूल में. ये आम लोग बच्चों से थोड़ा अलग है. Yes, sir. से जा रहे हैं. अभी समझना बड़ा मुश्किल है. कृपया इसको आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर दीजिए. Zarur, sir. Sir, this session is for children with all abilities. So we are trying to make sure that we are teaching the kids. हम बच्चों को इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं so that the kids will understand it. So no problem. Don't worry. Don't get disheartened. बच्चा आपका नाम क्या है? सबसे पहले यहाँ पे तो मुझे मोटो जी दिखाई दे रहा है. What's your name? You are on mute. आप mute पे रहो. अनम्यूट है. अरमान. अब बोल अरमान. My name is Arman. Okay, so your name is Arman. Arman, don't worry at all. हम आपको पढ़ाएंगे अच्छे से and you will also get to know how to use the laptop and your computer. बहुत simple चीजें हैं. So we'll just get to know that. So आपने सबसे पहले तो क्या प्रेस करना है? You press the left button. You press left button. आपके जो लैपटॉप पे लेफ्ट बटन है. This keypad. Yes, see this keypad. This is a keypad. And there is this left button. I can see. You can see Pranav. Thank you so much. ये उसके साइड में जो है. Yes, press that button. दिल्ली वाले है ना. वो बटन प्रेस करती है आपके स्क्रीन पे क्या आ जाता है? Ma'am, this one? ये Yes, Binyamin. Yes. जैसे ही आपके स्क्रीन पे वो आ गया, उधर आपको ऑप्शन आ रहा है. न्यू का ऑप्शन आ रहा है आपको. न्यू नीचे देखो न्यू का ऑप्शन है वहाँ पे. NEW न्यू. यस मैम. सो न्यू पे क्लिक करो तो और कितने ऑप्शंस आते हैं? यस, वेरी गुड. यस, सो देखो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन आ रहा है आपको 3rd या 4th नंबर पे. Rucha, can you please tell me which one is the Microsoft Word option for him? Yeah, it's the 6th one. 6th one. Just count, baby. 1, 2, 3, 4, 5, 6 count करो और 6th नंबर पे जो फाइल है उसको क्लिक करके ओपन करो. Click on that. Microsoft Word document. Yes, Microsoft Word document. Click on that. ये हाँ, 6th button. नहीं बेटा, कॉन्टैक्ट के नीचे. Okay, contact के और नीचे. और नीचे. हाँ, परफेक्ट, वो वाला. Click on that. Yes, the other kids, you are doing such a great job. Game के लिए सारे बच्चे excited हैं? Are you all excited for the game? Okay, and you are not going to save the file using the, आप वहाँ पे नहीं जाओगे, आप वहाँ पे फाइल पे क्लिक नहीं करोगे, save as नहीं करना है. You have to press the button Control and S together. Okay, use these two keys, press Control and S together and save the file. All right. So now I have got game for you all. Okay. We are going to play that game now. And I have divided that game in 2 parts. So the game is very simple and interesting. You all can see my screen.
तो ये है फर्स्ट गेम हमारा and it's a speed test. Okay, so this game is based on speed. So आपको क्या करना है, आपको word file open रखो, ठीक है? Don't close the word file. You keep your word files open. What you have to do is, I am going to show a word in front of you only for 1 second. एक सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए सिर्फ मैं आपके सामने एक वर्ड दिखाने वाली हूँ and you have to type that word in your word file. Okay? So आपकी word file open ही रखना, close बिल्कुल नहीं करना है. I am quickly, very fast, I am going to show it to you few words and you have to type those words using both your fingers. पता है मैंने जो वर्ड्स डिसाइड किए हैं, जो मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, these words are divided equally on the keyboard. मतलब कुछ वर्ड्स जो है वो आपके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में है, कुछ लेटर्स जो है वो आपके कीबोर्ड के राइट साइड में है. So whenever you have to use some letters, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सबके सब बच्चे अभी कीबोर्ड में देखो, everyone look down, look at your keyboard. So there are letters such as P, O, L, K, M, N, J, I. So ये letters जो है, ये सारे letters आपके right side में हैं. So all of you are going to use your right fingers to type those letters. But जो letters आपके left side में हैं, for example Q, A, Z, S, W, X, C, D, ये सारे जो आपके letters हैं, you have to type those letters using your left hand. Okay? मुझे पता है बहुत से बच्चे सिर्फ एक हाथ से टाइप करते हैं और कुछ बच्चे दोनों हाथ से टाइप कर सकते हैं. So this game is all about how to use your fingers, how to use both the fingers of both your hands. So मैं आपको बहुत quickly मैं आपको words दिखाने वाली हूँ and you have to use your fingers, both your fingers. This is the index finger. जो सबसे पहली उंगली होती है हमारी, ये उंगली को हम यूज करेंगे और ये उंगली को यूज करके हम ये वर्ड्स जो है वो टाइप करने वाले हैं. So let's start with the first word, which is. Excuse me, ma'am. Yes, बच्चा. मेरा लैपटॉप दिख रहा है? आपका लैपटॉप मुझे दिखाई दे रहा है. अब ठीक है. Very nice. See, you open a word file. That's so nice. Good. Yes. क्या दबो? Now, हाँ अभी कुछ नहीं, अभी हम गेम खेलने वाले हैं एक. So what are we going to do now? जो words आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे मेरे स्क्रीन पे, वो सेम वर्ड्स आपको टाइप करने हैं उस फाइल में जो आपने ओपन की है. But you have to use both your fingers. Okay? You will not do it with only one hand or only one finger. You have to use both your fingers of both the hands. ठीक है, दोनों हाथ यूज करके करना है. All right, so let's do it. Let's start the game. All of you excited? Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ओनली टाइपिंग करते हैं मैम, पर वो एक ही फिंगर से टाइपिंग करते हैं. Yes, ma'am. That is the reason. So yes, a lot of parents have said that the kids use only one finger, and that is what this whole game is about. They have to divide the alphabets. हमने alphabets को divide करके ही कुछ words बनाए हैं, so that when the alphabet is towards the right side of the keyboard, they have to use the right hand, and when the alphabets are towards the left side of the keyboard, they have to use the left hand. Yes, kids, understood all of you? Right and left? Yes, ma'am. Yes. So we are quickly going to start Yes, the ma'am. game, and everyone is going to be a winner. Okay, सारे बच्चे मेरे winners हैं. So we are quickly going to start the game, and this is your first word. Type fast. Dog. Yes, use both the fingers. Okay. Great. The second word. Bat. Yes, you have to type it, Binyamin. Yes. Bat. टाइप करना है ईशान, टाइप करना है. You don't have to call out on that name, the word, but you have to type that word fast and using both your hands. Don't use a single hand. Done, ma'am.
Done, ma'am. Okay. Yes. Now here comes the next alphabet. Okay. H. Yes, I would request the kids not to press any button on the screen. All right. Yes, here comes the third button, the third word. Quickly, quickly, quickly. Use both the fingers. Okay, I can see Arya, Nimisharya. Here comes the fourth word. Quick, 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 quick. Here comes the fourth word. Here comes the fifth word. Here comes. Okay. अब आप में से मुझे बताओ 5 वर्ड्स में से कितने बच्चे पांचों के पांचों वर्ड्स लिख पाए हैं? Just put it in the chat box. Just put it in the chat box. How many words could you write properly? Okay, the complete words. How many words could you write? Okay, Harshit had said all. Good. Okay, Siddhant 4, Pranav 4. Okay, Joanne 4. Ayush has done all. 4, all, 4, all. Okay, all. 5, all. 3. Neil, okay. Okay, all. Used only one hand, okay. And how many of you, ये जिन्होंने all type किया है, all 5, how many of you used both your fingers to do it? Raise your hand. कौन से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने दोनों हाथ अपने use किए हैं? To write it. Okay, I can see Somitra and Aishwarya and Aditya and Ayush and Neil. Okay, great. Great. How many of you have used both your hands to type it? Okay, Krishna, Manali. Okay, Joanne has used only one hand to do it. Arna has also used only one hand. Okay, Harshit has asked me a question, one hand is better or both? So yes, both hands are better to do it. हम simultaneously करते हैं and हमारा speed भी increase हो जाता है. So today's game or today's day is about increasing your typing speed. मैंने starting में ही बताया, हमने topic देखा है कि हमारा जो topic है that is about typing. So ma'am is going to increase your typing speed and इसी के साथ साथ yes parents, this is for all of you. So the reason why we are doing this activity is because when kids use both their hands, they are simultaneously using at the same time using their brain as well. So it is very important even for their fine motor skills to happen that they use both their hands while they are typing. It increases their speed, it increases their efficiency of typing it. And there is also one game. I'm going to put it in the WhatsApp group. You just have to download that game, and that game is about typing and how speedily you can type. So just make sure that the kids play that game online. It's not online. You have to download it and then you can just play it any which way, and they will get letters on screen. So that means they also get knowledge about the letter. They also get to understand the alphabets, because in this keypad the alphabets is not in sequence. It is not like A, B, C, D, E, F, G. So the alphabets are up and down. So once they get so habitual to the alphabets, once they start understanding the alphabet, a time comes where they don't even have to look down while they are typing a particular alphabet, because they now then know, उनके mentally उनके brain में वो चीज आ जाती है कि ये alphabet कहाँ पर है या मुझे ये alphabet कैसे press करना है, click करना है. So the whole activity or the whole purpose behind it is very different. 2-3 चीजें हैं जिसको compile किया गया है.
One is for their motor skills, one is to use both sides of their brain, another thing is to increase their efficiency and the speed of the hand movements. Another thing is that they get understanding about the alphabets on the keyboard. So even if they are not able to learn, for smaller kid it is कि अगर बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, अभी भी अल्फाबेट रिकॉग्निशन नहीं है या अल्फाबेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस कीबोर्ड वेरी स्पेसिफिकली आप उनको वो चीज सिखा सकते हो. So yes, first of all, clap for yourself, all those who could type all the 5 words nicely, and even for those who tried their best and you did the typing. So सबसे पहले अपने लिए clap करें. Yes, clap. Okay, great. So now we move to the second game. अब ये जो second game है ये थोड़ा सा बड़ा गेम है. Okay, it's not like just small words. अब इस second game में मैंने कुछ words लिखे हैं और उन words के साथ साथ मैंने ये भी लिखा है कि आपको 2 fingers यूज करने हैं या एक ही finger यूज करना है. Okay, so you have to make sure that you are, for example, see, you can see here on my screen. So here I have written hello, and hello के सामने मैंने लिखा है 2 fingers. That means when you are typing hello, जब आप hello लिख रहे हो, आपको compulsory 2 fingers use करने हैं. Okay, you are compulsory going to use these 2 fingers and you are going to type. जब आप बाय टाइप करोगे तब आपको सिर्फ एक ही फिंगर, यू कैन यूज योर राइट हैंड और यू कैन यूज योर लेफ्ट हैंड, एनी विच हैंड इज फाइन, एंड यू हैव टू टाइप बाय. ओके, सो ऐसे मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस आपके लिए लिए हैं एंड यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. दैट इज द रूल ऑफ द गेम. जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो गेम का रूल होता है ना, सो ये इस गेम का रूल ये है कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ही टाइप करना है. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वर्ड हेलो. सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन. आप सबसे पहले तो कीबोर्ड पे देखिए और कीबोर्ड पे देखिए कहाँ पर HELLO है. फर्स्ट लुक एट वेयर HELLO is written. Now use both these fingers. Yes, Aishwarya, I can see your thumb down. What happened? Okay. Yes, sir, please, you can definitely add something. Joanne. Yes, look at the screen. Look at the screen. Look at the keyboard. See where hello is written. See where hello is written. Yes. There is an echo. There is an echo. I'm done. Okay. There is an echo. I'm done. Is it okay now, ma'am? Yes, sir. It's Done. fine. No, sir. Actually, there is still lot of echo. Yes. So you have, sir, you can type it out to me, if that's okay. एक बार रुक जा. Okay. So you have typed hello with 2 fingers. Now type bye with a single finger. Type bye Two with single fingers? finger. No, with single finger. Ishan only with one hand, one finger. One finger खोल दिए? Yes. You have to type. Yes, you can use left or right. Any is fine. 2 fingers. Yes. चुप. Now use one finger, Ishan, and type the word bye. Yes, use one finger and type the word bye.
तो मैम आई हैव डन बोलो, आई हैव डन बोलो. Can we start? Yes, you can start. You have to start. You have to type the word buy with one finger. And parents, please make sure that the kids are going with the same pace. What are Yes, ma'am. Just make sure that the kids are going at the same pace. They are not too fast. They are not too slow. They are not going ahead of time. Okay. Then the next we go is I am an Indian. Using both the fingers means one finger of your left hand and one finger of your right hand. Excuse me, ma'am. Yes, baby. अब कुछ करो मैं. हाँ बच्चा, टाइप करेंगे हम हेलो HELLO. सो कीबोर्ड पे देखिए H कहाँ है. मैं यही लिखूं सारा. हाँ मैं यही लिखूं जो आपने लिखे दिए. हाँ, वही टाइप करना है जो मैंने लिखा है. Yes, but you have to use both your hands, okay? Fingers of both your hands. I have done. Okay. You have done, Balaji? I have done. Great. Yeah, done. Am I Yay. done? Great. Yeah. Great. हाँ बोलो मैम. मैम आई एम Great. डन. Great. अभी आपको यहाँ पे देखना है बच्चों. Yes kids, you have to see. मैंने ये जो इंडियन में I है, आ गया. ये इंडियन में जो I है, ये मेरा I कैपिटल है. So in that case, what are you going to press? आपको जब कैपिटल करना है एक लेटर, तो हम क्या प्रेस करेंगे? Backspace. Shift. No, wrong. Shift है ना? No. Clocks. Yes. ma'am. Caps lock. हाँ. कैप्स लॉक प्रेस करना है. कैप्स Yes. लॉक मतलब वो बटन जिस पे छोटू सा एक लाइट लगता है. So you have to use caps lock, not shift. And Manas, I can see a background change. पीछे ये आ रहा है, कुछ बैकग्राउंड चेंज किया है. I can see a bridge. Clear it out quickly. You know that. Excuse me, ma'am. Yes. मैं कैपिटल कैसे लिखूं इसमें? कैपिटल कैपिटल कैसे Caps लिखना lock. है? कैपिटल के लिए हम कैप्स Caps लॉक lock. वाला बटन प्रेस करेंगे. आपके वहां पे कैप्स लॉक वाला बटन है, उस बटन को हम प्रेस करेंगे. यस, फर्स्ट 1 2 3 4 फोर्थ बटन. यस, वेरी गुड. ये देखो लाइट लग गया था. गुड. Yeah. Yes, now Manas, the screen is back. I'm Good. done. Done. Now we come to the last part which says I am happy today. You have to do it with both your fingers. I am happy today. I am happy today. Okay, Aishwarya is not well. No problem, bacha. Aishwarya, please take care. I got your message in the chat box. Get well soon and then do the second game. It's no problem at all.
All right. So yes, done with I am happy today. You can show me a thumbs up if you're done. Great. Done, ma'am. Okay. I can see so many screens. All right. Great. Done. Yeah, Done. ma'am. Good. ये मंडे को Good. दूध और अंडा देते हैं और थर्सडे को फ्रेश बाटी देते हैं, ठीक है? Good, all of you. Good. अब इतने टाइम में तो आपको पता चल गया होगा. Now you know that which alphabet is where. Now you should able to understand which alphabet is where and कौन सा टाइप करना है. So we come to the last game here and the last game is a speed again. Okay? बहुत speed में मैं आपको letters बताने वाली हूँ. So you really have to pay attention to me. You really have to pay attention to what ma'am is trying to say and listen to me carefully so that आपको पता चलेगा कि मैं कौन सा alphabet बोल रही हूँ. So you just have to type that alphabet on the word file. Okay? But very fast. Like very fast. Okay. I'm going to close my eyes also so that I don't see the keyboard. But you have to type very fast. So you have to pay attention to me. आपको ध्यान देना पड़ेगा और आप चीटिंग नहीं करोगे. मैं आंखें बंद कर रही हूँ. Okay? No one will cheat. No one is going to cheat. I'm going to close my eyes quickly. So the first alphabet is alphabet Q. Quickly type alphabet Q. Done, ma'am. Yeah. Now the second alphabet is P. Done. Third alphabet is T. T. T for tiger. T. Fourth alphabet is N. Done. Next alphabet is A. Next alphabet is C. My eyes are closed, so don't do any cheating. And we have to write with both hands. Next alphabet is, yes, you have to use your both hands here. So जो alphabets आपके right side में होंगे, you will use your right hand. जो alphabets आपके left side में होंगे, you will use your left hand. Yeah. Yes. Now the next alphabet is G. Done. Okay. Now press enter button. Okay. So you come to the next line. Now quickly I am going to say it again. So first alphabet is M. Second alphabet is O. Third alphabet is N. Line. Fourth alphabet is D. B. D for donkey. D. Dog. Next alphabet is A. Apple. And the next alphabet is Y. Ma'am, can you repeat again? Okay. मैं The first alphabet is M. The second alphabet is O. The excuse me third ma'am. alphabet is N. The fourth alphabet is D. Fifth alphabet is A. Elephant. And the sixth alphabet is Y. So that makes Monday. yes. Yay! That makes Monday, which is today. ठीक है मेरा. आने वाले हो. Yes. You're doing a great job, baby. आप ठीक कर रहे हो. I again forgot your name because it's written Moto G plus. So, what was his name? I forgot. Sorry. Okay. So that makes Monday. Alright. So I just hope parents, please just make sure that the kids are using both their hands. Soon I will be putting it in the chat box. Yes, Arman, you are doing a great job. Good. So yes,
So kids, parents, just make sure that the kids are using both their hands while they are typing. I will be soon putting up in the WhatsApp group. So the game is there on any app store, be it an iPhone or an Android, iOS or Android. So you can just download that game, and it's very interesting for the kids because the alphabets keep on going off screen. So it will start like a balloon from down, and then it will go up, and it will disappear. All they have to do is, within that time slot, they have to press that button. They have to press that particular alphabet. So in fact, I have been using in my previous school as well, offline. So it's a very interesting thing to do. The kids will enjoy it. And yes, so now you know where all the alphabets are. Quickly show me a thumbs up. और बताओ मुझे, कीपैड पे कोई अल्फाबेट मिसिंग है? कीबोर्ड पे कोई अल्फाबेट मिसिंग है? A to Z अल्फाबेट्स है या कोई अल्फाबेट मिसिंग है? नहीं मैम। सारे हैं ईशान? पक्का? नहीं मैम। नहीं मैम। सब है। सब है? हाँ। A to Z है। Very good. A to Z है? Very good. Yes. Great. So just practice the typing thing. Just practice with both the hands. Parents, just make sure that they do it with both the hands for their speed and for their motor skills. And yes, you all have done a great job today as well. So yes, Manas. Yes, I can see you. So yes, you all have done a great job today. So pat your back. Pat your back. UPELG का क्या है? ELEG? क्या हुआ बच्चा? UPELEG का समझ नहीं पा रहा है मुझे। वो कुछ नहीं था, वो तो मैंने ऊपर नीचे अल्फाबेट सबको दिए थे। अच्छा ऐसे ही। Yes. Okay. So for yourself, pat your back, and for your friends, clap. सब फ्रेंड्स के लिए क्लैप करेंगे, खुद के लिए you will pat your back. Cool. So चलो, see you all on Wednesday, and bye bye. Bye ma'am. Bye bye. Bye bye. Bye ma'am. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye, Bye. ma'am. Thank you.